So I think we have by now discussed about the first two categories of happiness, जो त्याग आधारित प्रसन्नता और गृहस्थ प्रसन्नता की मुझे लगता है कि क्लैरिटी होगी. So to make sure that everything is clear in this direction, we'll have a breakout session in which you can discuss and make sure that all the members of the group are on the same page and there is a clarity. और अगर फिर भी प्रश्न रह जाते हैं, we can bring it to the main session after the breakout sessions and then we'll clarify further. तो मैं ग्रुप्स बना देता हूँ, तो उसमें आप लोग इन पहले दो जो एस्पेक्ट हैं, वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड renunciant happiness based on the renunciation or giving up, त्याग आधारित और गृहस्थ प्रशंसा जो हमने कही. डॉक्टर अनुराग, आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? डॉक्टर अनुराग, रूम नंबर 1 के आप ही थे ना? हाँ, हमारे ग्रुप में 5 लोग थे. पूनम जी, दीपक जी थे, जेके शर्मा जी और प्रिया जी थी और मैं था. तो अभी लोगों में थोड़ा सा ये कि नेकम सितानी सोमनस में कैसे प्रवेश करें. अनित जो है, अनित और अनत, अनित से भी ज्यादा अनत की समस्या है, तो अभी वो ज्यादा क्लियर नहीं हुई है. तो कुछ लोग मुदित भाव को या करुणा भाव को उसको प्रज्ञा मान रहे हैं, और जबकि यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब अनिच, दुख और अनत से. तो अनिच तो देख भी पा रहे हैं, लेकिन अनत में अभी तक नहीं पहुंच पा. अत की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो वो भाव पुष्ट नहीं हुआ है. तो दान की बात कर रहे हैं, तो त्यागी जी कह रहे हैं कि हम ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप की बात तो समझ में आ रही है बौद्धिक लेवल पर, लेकिन एस्केप तो तभी होगा जब हमारी निरोध संज्ञा पुष्ट होगा. निरोध संज्ञा तो पुष्ट होती ही नहीं. विराग भी आ जाता है, पहाड़ भी हो जाती है, लेकिन निरोध वाली स्थिति वो नहीं आती है. मुझे भी नहीं आई. गिरिमानंद करने पर भी विराग तक तो पहुंच गए, लेकिन निरोध संज्ञा पुष्ट नहीं. उसकी अगली वाली आ गई, मतलब बीच में निरोध संज्ञा छूट जा रही है और उसकी अगली 2 आ जाती है. ये एक समस्या है. इसीलिए वो कुछ ही सेकंड के लिए होती है, जो अनुभूति होती है उसके आगे होती नहीं. और जब तक नहीं होगी, जब तक निरोध संज्ञा ना पुष्ट हो. निरोध संज्ञा जब तक पुष्ट ना हो, जब तक I think we are getting digressed. Let us stop. हम तो सिर्फ सामान्य सी बात कर रहे थे कि भाई क्या हमें गैसतानी सांसारिक सुख और त्याग आधारित सुख में समझ में आया है, बस इतनी सी बात कर रहे हैं. वो कैसे गैसतानी में तो अब सब क्लियर हो गया. अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम कर चुके हैं चर्चा. अष्टांगिक मार्ग पुष्ट होगा तो होगा. अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ होगा. We are not arhants, we are not talking of that. Let's not digress. We are talking a very simple thing. क्या हमको बस क्लियर है? क्या हमको कोई अनुभव है उसका? नहीं है, फाइन. अभी नहीं है, अभी हमें अनुभव नहीं है. तो हम गैसतानी तो सबको क्लियर हो गई है, पर नेकम सितानी में समस्या. अच्छी बात. It is so it's pretty fine, but I need to really from the discussions it needs some more clarification. ऐसा लगा मुझे. तो आपको ऐसा लगता है अच्छी. मैं भी और बाकी ग्रुप से पूछ के इकट्ठा कॉमनली एक I'll give a comprehensive response. Okay. जी. ग्रुप 2 में काइंडली गीता. हमारे ग्रुप में दीपक जी, निखिल जी, सुप्रिया, हर्षिता एंड माई सेल्फ. तो बेसिकली वर्ल्डली हैप्पीनेस, गहसितानी सोमनसानी तो काफी डिस्कशन हुआ, लेकिन उस ऑन दैट बेसिस त्याग आधारित अनित्य बोध ऐसा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुआ है कि द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिच्छा. स्टिल लाइक फ्यू एग्जांपल्स जो हम लोग ने शेयर किया. वन लाइक वी डिस्कस्ड ऑन काफी मतलब
with eye sensed sound and mind based, ये तीनों चीज पर हमारी डिस्कशन हुई थी। तो दीपक जी ने जैसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी कि उनके घर में देयर इज अ प्लांट, जो जब वो फूल खिलता है तो उन्हें प्लेजेंट फीलिंग होता है, लेकिन वो जब शाम को फूल मुरझा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वो क्रेविंग जगती है, वो ही इज एबल टू सी दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। तो सुबह वो फूल खिल गया तो शाम को तो ये जो अराइज हो रहा है वो तो समाप्त होगा, तो कोई क्रेविंग नहीं है ऐसा। पर इज इट लाइक अनित्य बोध पुष्ट हुआ है या दुख बोध तो नहीं है, क्योंकि उसमें कोई क्लिंगिंग है नहीं है, बट कि कंप्लीटली निरोध हुआ है या ड्रॉप कर दिया है कि ये बदल रहा है, वो देयर इज अ सटल काइंड ऑफ डाउट फैक्टर उन्होंने बताया कि बट ही इज प्रैक्टिसिंग इट, ऐसे ये रूप आधारित था। ऐसे उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था बच्चों को लेकर, लाइक व्हेन ही सीज द किड्स प्लेइंग ही फील्स गुड, तो वहां पर भी कोई क्रेविंग नहीं है, और वो जब चले जाते हैं तो ऐसा दुख भी नहीं होता है। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि कपड़ों के प्रति या शूज के प्रति कोई आसक्ति ऐसा है नहीं है, कि टेंडेंसी नहीं है कि मैं इसको पकड़ के रखूं एंड लाइक आई शुड होल्ड ऑन टू इट, और देयर इज अ क्रेविंग एज सच। इज क्वाइट कंटेंट बिकॉज ऑफ एट दिस एज where he is getting his retirement pension and everything, तो वहां पर उन्हें ऐसा कोई वो अनित्यता देखते हैं। और उन्होंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया था म्यूजिक, ओल्ड सॉन्ग्स जो पहले वो बहुत ही सुनते थे, तो अभी जब वो सुनते हैं तो ऐसा कोई प्लेजेंट फीलिंग तो नहीं, पर ठीक है न्यूट्रल फीलिंग जगता है, और ये भी उन्हें समझ में आ रहा है कि ये टेम्पररी है और इसके प्रति कोई क्लिंगिंग नहीं है। सो दिस इज हिज शॉर्ट एग्जाम्पल। ही हैड आल्सो गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ फूड, पर वहां पर लाइक वी नीड टू डिस्कस इट आफ्टर आई फिनिश विद द अदर एग्जाम्पल्स सर, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। निखिल जी ने दूसरा एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था ऐसे ही फूड के प्रति, कि पहले वो बाहर से खा लेते थे, अभी थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो गए कि लाइक यू नो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ क्रेविंग विद द स्मेल एंड ऑल्सो फॉर द टेस्ट के लिए। अभी वो अवॉइड करते हैं, फूड बाहर से नहीं खाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक चेंजिंग, जस्ट घर का ही खाना खाते हैं, और ऐसा कोई क्रेविंग नहीं है कि उन्हें कुछ मीठा खा लेना चाहिए, या क्योंकि उन्हें वो पता चलता है कि ये खाने के बाद में ये टेस्ट भी थोड़ा टाइम के लिए रहने वाला है, ये उत्पन्न होगा और इट विल अराइज एंड पास अवे, तो इसको पकड़ के नहीं रखना है। ऐसे वो बता रहे थे कि अगर बाहर जाते हैं तो कुछ स्मेल आ जाता है पिज्जा का, सो व्हेन देयर इज अ स्मेल देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो क्रेविंग कि अब मैं उसको खरीद के खा लूं या बाहर का कोई चीज खा लूं, बिकॉज वहां से उस जगह से थोड़ी दूर हट जाते हैं, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये स्मेल भी टेम्पररी है और इसमें कुछ रखा नहीं है, देयर इज नो नीड टू क्लिंग ऑन इट। तो ऐसे उन्होंने दूसरा एक एग्जांपल दिया था to with the post organization, praise and appreciation, like you know for post people like you know wanted to get benefit and I should be appreciated in the organization। तो अभी जब वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, अभी वो जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ रखा नहीं है एंड इट्स चेंजिंग। आई थिंक निखिल जी यू कैन ऐड इफ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग ऑन दिस। I'll give my example. Two examples I'll give. One is like, you know, at a very early age, I tasted success in my work. So like, you know, there was a lot of happiness and like I changed different departments and changed into different professions. Like, you know, I had my, I come from a tourism background, travel, and then I got into a media and I changed in the same organization, I changed different departments. तभी like उस टाइम पर इतना मुझे वो नहीं था कि मुझे सिर्फ ये था कि I wanted to learn and I wanted to do best और मुझे यहाँ पर रहना है and I wanted to do it। अब मैं जब उस चीज को याद करती हूँ, like you know I've been reflecting from few years, I've dropped a lot of things on that. Now I've given up my job also 2 years back, and like
अभी काफी टाइम के बाद में मैंने ये 2 दिन के पहले भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, जब मैं उस चीज को देखती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग माय वर्क फॉर माय लाइवलीहुड, देयर इज नो बर्डन हैज सच, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। मुझे पता है कि ये अनित्य है। जब मैं खुद को देखती हूँ इसके आधार पर कि मैंने कितने सारे डिपार्टमेंट्स चेंज किए, मैंने वो तो बदलते ही रह रहा है, और इट्स ऑल बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। तो उसका clinging I don't have it as such when it comes to my work right now. There is only an understanding that I'm only doing this for my livelihood and to practice generosity. That's it, and there is no clinging as such. Second example I'll give you about praise and appreciation, criticism and appreciation. Like there is a, of course, praise is like किसी सबको अच्छा लगता है, तो आई ऑल्सो यूज्ड टू फील वेरी गुड। इट वाज नॉट कि मैं क्लिंग करती हूँ। दैट सेम पर्सन लाइक व्हेन देयर इज नो अप्रिसिएशन एंड देन स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग इट, तो मैं उस चीज को मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि लाइक यू नो देयर इज नो नीड टू होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज ये दोनों ही अनित्य है। और व्हेन आई लुक बैक एट माय ओन कलीग्स एंड फ्रेंड्स, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स भी चेंज हो गए। देयर इज नो पर्सन ऑल्सो फिक्स्ड, एंटिटी इज ऑल्सो लाइक यू नो इट्स नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज सो impermanent. If I look back 10 years back, I had a different kind of friends with whom I'm not even in touch. अब मैं जब देखती हूँ तो I take it as and when it comes, so I'm not clinging to it कि I wanted to like you know have this kind of friends or wanted to hold on to it or hang on with such people. ऐसा नहीं है। It's not कि I have any aversion है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो I'm not clinging to it. That one thing I can see it very clearly when it comes to people. So to a larger extent, except for my family members, so वो मैंने to some extent I have dropped it. Third example I'll tell you, I used to do a lot of work for my, it's a wholesome deed, मेरी मम्मी का इंश्योरेंस। I think I'll stop here. और दीपक जी का एक एग्जाम्पल था सर, उन्होंने कहा था कि जब फूड, जब उन्होंने दो या 3 दिन पहले उन्होंने कुछ खाना डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, तो जब उन्होंने वो खाया था तो उनको ऐसे लगा कि इसमें नमक कम है। पहले उनको ये विचार आया कि ठीक है, मतलब दिस इज नॉट फॉर टेस्ट, तो मैं लाइक यू नो आई विल नॉट ऐड सॉल्ट। बट थोड़े समय के बाद में उनको थोड़ा सा रिएक्शन हुआ एंड देन ही एडेड सॉल्ट टू गेट सम फ्लेवर। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, सो दैट इट विल गिव सम गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। तो वो किस में आ रहा है, लाइक वी आर नॉट एबल टू पुट दैट कि इट इज अ रिएक्शन इज व्हाट आई वुड लाइक, दैट्स व्हाट ही सेड। But from off late, he's been practicing Anitya Bodh and understanding from past 3-4 days. He's been reflecting and working on himself on getting that impermanence thing. Okay. मैं आधा मिनट लूंगा डॉक्टर साहब। एक टेस्ट का था कि खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो अनित्य तो है, आई फीलिंग। फिर वो देन टेम्पटेशन के यार चलो नमक तो डाल लो, कोई बात नहीं, इस वक्त तो नमक डाल के जो सही तरीके से खाना, जो अपने टेस्ट के हिसाब से खा लो। दूसरा जो फूल मुरझा गया तो अनित्य तो आ गई, फीलिंग आ गई, लेकिन उसमें सुख प्रसन्नता मुझे एक फीलिंग नहीं आई। अनित्य बोध के आधार पर जो है प्रसन्नता, जो आप कह रहे थे ना कि वो प्रसन्नता वाली बात नहीं आई, जो फूल के खिले होने पे आई थी, वो तो त्याग कर दिया उसको। तो ये मेरे जो छोटे सबमिशन है। सर एक और डिस्कशन में आया था, जेनरोसिटी की बात हुई थी, लाइक दीपक जी ने कहा था इफ यू हैव टाइम, लाइक बिकॉज वी वर नॉट एबल टू पुट इट वेयर इट इज, put it briefly, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग जेनरोसिटी और दान देते हैं तो लाइक दीपक जी ने कहा कि देते हैं तो बिकॉज इट्स अ गुड कर्मा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। बट वो एक सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि देते वक्त आपको क्या कुछ सेंस ऑफ सेल्फ है क्या, like you know I am going to get some benefits, good karma is what he's used this word. Good. I get your point. ठीक. Now group 3, Rajendra ji. Yeah, in our group we started with Mr. Amit. तो अमित जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो वो टीचिंग्स के साथ ज़्यादा उनको अभी पूरा एक्सपोजर नहीं है। He was discussing his one of the problems he had because he's a foodie and he has now started controlling it. So the craving for food which he had,
is slowly diminishing. But whether it is because of the wisdom that, or whether it is because he feels that he needs to control his diet, so there is no clarity in his mind about it. And then we have another example from Jatin. Jatin gave us two examples. One was he wanted to get a car. He went to a storeroom, और वहाँ पर storeroom में जाकर के जब उन्होंने पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में पूछा तो गाड़ी वहाँ 2 महीने के बाद डिलीवर हुई थी. तो उनको उससे दुख हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर एडजस्ट किया, which is neither here nor there, because ये तो इसमें उनको अनप्लेजेंटनेस भी फील नहीं हुई और प्लेजर भी नहीं मिला. और सिमिलरली एक और एग्जांपल उन्होंने दी कि मेरे को घड़ी जो है, घड़ी एक पर्टिकुलर वॉच उनको खरीदनी, उसके प्रति बहुत क्रेविंग थी, उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन किया उसको. He did not get immediately go for that purchase, but later he purchased. काफी समय के बाद उन्होंने उसको खरीद लिया. तो हैप्पीनेस उस समय भी नहीं मिली और बाद में तो मिली ही मिली. तो ये भी सेंसरी हैप्पीनेस जो थी वो बाद में हुई. एंड राहुल जी हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हें एलर्जी होती है मसालेदार खाना खाने से, लेकिन उसके प्रति उनको फिर अवेयरनेस बढ़ी कि मुझे मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अब आज की डेट में वो उसको नहीं खाते हैं. तो एक वो नीड बेस्ड हो गया एक किस्म से. और बट नाउ ही डजंट फील कि वो नहीं खा रहे हैं, तो नॉट अ बिग डील. बट महापन्यो जी ने हमको 2-3 एग्जाम्पल जो अपनी पर्सनल, उन्होंने क्रिकेट के बारे में बताया कि किसी जमाने में क्रिकेट के प्रति उनकी बहुत रुचि थी और आज वो बिल्कुल उसके तरफ उनका रुझान जाता नहीं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि उन्होंने बताई कि यस, नाउ देयर इज he gets an happiness because there is nothing like that and he has understood ये अनित्य है. और इसी तरह से न्यूज़ के प्रति भी उनकी पहले बहुत ज़्यादा थी क्रेविंग, तो उसके प्रति भी उनका वो रुझान अब खत्म हो गया है. और as far as my case is concerned, I have already discussed कि मैंने अपने, बिकॉज मैं तो इस अनित्यता को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आज की डेट में, बिकॉज आई 2-3 इंसिडेंट्स जो रूपों के प्रति जो मैंने देख रहा हूँ, रोज ही देखता हूँ, तो कैसे, और जो पहले इनके प्रति मेरा एक बहुत चिपकाव था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है. और उसमें जाहिर है कि उसमें अनित्यता का बहुत बड़ा हाथ है. पहले मुझे रोना भी आता था, मैं अलग से बैठ करके काफी रोता था, बट अब वो ऐसा नहीं है क्योंकि नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि यस, लाइफ इज इम्परमानेंट एंड वी ऑल हैव टू गो वन डे. तो इस तरह से अभी, और हमारी एक बुआ है वो बहुत बीमार हैं, उनको भी मैं कल देखने गया था, तो उनके लिए फिर नर्स वगैरह का इंतजाम किया, तो वो भी वहाँ भी यही दिया. फिर हमारा कजिन ब्रदर उसके साथ भी रहा काफी दिन. तो ये अनित्यता का काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि there is my friend is struggling in America, उसकी बीवी, she is in the last phase, वो मतलब any time she will pass away. तो वो भी he is very close friend of mine. तो इस तरह से जो ये चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो अनित्यता का बोध तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और इसके प्रति जागरूकता और विजडम जो है काफी हद तक बढ़ गया है. Thank you very much. Thanks to everybody for sharing your experiences and trying to grapple with this rather subtle concept. मैं कुछ 2 चीज जनरल, because I've seen there are certain general clarifications which are needed, इसलिए मैंने इंडिविजुअली जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि फिर उसमें हम get caught in particulars. जब हम ये त्याग आधारित प्रसन्नता कहते हैं, unfortunately the word itself can mean create a wrong impression. सिर्फ उसी वर्ड को अगर हम देखें कि मैंने कुछ त्याग कर दिया उससे मुझे प्रसन्नता मिल गई, इट्स नॉट दैट. क्योंकि वो डेफिनेशन दी हुई है. आई एम नॉट सेइंग कि त्याग करने से प्रसन्नता नहीं मिलेगी. दैट्स व्हाट इन द बिगिनिंग, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. पहले मैंने
सामिश और निरामिश का डेफिनेशन भी दिया था इसी। तो अगर मैं इस जेनरोसिटी की जैसे बात की, कोई एक दान देता हूँ तो उससे प्रसन्नता जागती है, वो एक सेंस में कह सकते हैं त्याग के आधार पे हुई है, बट इट इज नॉट दिस, इट इज निरामिष सुख। मैं शिविर में सेवा देता हूँ 10 दिन, इतने शिविरों में सेवा दी, उससे प्रसन्नता जागती है क्योंकि मैंने अपने समय का दान दिया है। और कई भी और भी कारण होते हैं प्रसन्नता के, आप देखते हैं साधकों को लाभ हो रहा है और आपकी भी क्षमता थोड़ी पुष्ट हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर गिव अस हैप्पीनेस। आप अगर अपने समय के दान को महत्व देते हुए समझते हैं तो इसको भी त्याग आधारित प्रसन्नता कहा जा सकता है, इन द कोलोकियल सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ दिस सुत्ता। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आई थिंक ये मिक्सअप होने के कारण कई जगह ऐसा भाव आ गया। त्याग आधारित सुख जो भगवान इस सूत्र में बता रहे हैं वो सटल कॉन्सेप्ट है विच टेक्स अस टू लिबरेशन। Generosity, giving service will be helpful in doing that, but this will directly take us there. So there's a difference between the two. कि यहाँ पे हम अनित्य बोध, दुख, कुछ हद तक दुख बोध, कुछ हद तक अनात्म बोध के आधार पे एक्सपीरियंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, और हम सुख वाली बात कर रहे हैं, दुख वाली बात नहीं कर रहे। दुख वाली बात अगली बार में करेंगे कि दुखद परिस्थिति को कैसे वर्ल्डली अनहैप्पीनेस और त्याग आधारित अनहैप्पीनेस क्या है, बिल्कुल ही ड्रास्टिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट द यूजुअल कॉन्सेप्ट व्हिच यू टॉक अबाउट इन अदर सत्तास अबाउट अनहैप्पीनेस। सो वी हैव टू अप्रिशिएट कि इस सूत्र में जो भगवान कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, जो सलायतन के भंग कर रहे हैं उसको जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, 6 इंद्रियों के और 6 आयतनों के आधार के इंटरेक्शन को, भारी आयतन और भीतरी आयतन के इंटरेक्शन को एनालाइज करा जा रहा है। तो उसमें एक पैराडाइम दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं हमको किस तरह से हम आगे धीरे धीरे बढ़ के मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। मुक्ति नहीं आने वाली, त्याग समझ में आ गया तो मुक्ति आ जाएगी। दिस इज अ ग्रेजुएटेड पाथ। सो निरोध की बात करना इस समय कोई मायने नहीं है उसका। दैट्स अ वेरी फाइनल स्टेज, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। और ये समझ लेना कि मुझे विराग की अनुभूति हो गई, आई एम सॉरी, इट्स नॉट लाइकली टू बी देयर। इट्स अ बिग वेरी profound concept. We are still working on that path. तो जो यहाँ पे अनित्य बोध की बात की जा रही है, जैसे मैंने हर एक ग्रुप में जाके आप लोगों को फिर कहा, पढ़िए उसको दोबारा, कि वो प्रसन्नता जो अनित्य बोध के और दुख बोध के और अनात्म बोध के थोड़े थोड़े अनुभव के आधार पे आ रही है, वो परफेक्ट नहीं हो रहा। एक डिस्कशन हो रहा था कि हम परफेक्ट हो गए तो फिर तो अरहंत हो गया। ऑफ कोर्स, तो ये तो अरहंत के लिए वैलिड है? नो, वी सी दैट देयर इज अ पाथ। These are things which we have to practice. Of course, हम जैसे ग्रुप में बात हुई थी, हम तो अधिकतर अपने जीवन को संभालने में लगे, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दोष थोड़ा है। हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को सॉल्व करने के लिए धम्म को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बट वो काफी नहीं है। उसी के लिए वो सेकंड एलिमेंट दिया गया है। गृहस्थ दुख और त्याग आधारित दुख की बहुत प्रोफाउंडिटी है। जब उसको डिस्कस करेंगे कल से, you will see that's a phenomenal profundity of that. It challenges this notion of Dhamma for removing the worldly unhappiness, क्योंकि वो रिमूव हो ही नहीं सकती। वो बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जो कमेंट्स आए, तो जो कंसर्न भाई बहन थे वो उस बात को विचार कर लें। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 6 इंद्रियों के 6 आयतनों के ऊपर जो सेंसरी इंपिंजमेंट हो रही है, उसके अनित्य बोध की हमारी समझ बन गई है। इस हद तक बन गई है कि हम समझते हैं वो अनसेटिस्फैक्टरी हैं और वो
हमारे कंट्रोल में नहीं है, विपरिणाम धम्मा है। तो इसलिए उस डायरेक्शन की सर्च हमारी कम हो गई है, समाप्त हो गई है। उस डायरेक्शन की सर्च समाप्त होने से एक रिलीफ आता है, एक बोझ कम होता है, एक भार कम होता है। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। अब अगेन अनफॉर्चुनेटली हैप्पीनेस शब्द जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम कहते हैं मुझे तो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। It's not that is conventional sense of happiness. I'm getting exalted and getting carried away with the joys and happinesses. इसका मतलब एक्चुअली शब्द यूज किया गया सोमनस्य। सोमनस्य मीन्स प्लेजेंट मेंटल फीलिंग। मैंने कल भी कहा था शायद या परसों कहा था कि वो हम ट्रांसलेशन के लिए हमने उसको प्रसन्नता कह दिया। बेसिकली वो प्रेजेंट मेंटल फीलिंग है। सोमनस्य का मतलब कि मन में अच्छा लगता है, बस प्रतिक्रिया नहीं हो रही उसके ऊपर, और हम एक्साइट नहीं हो रहे। मन को अच्छा लगता है कि चलो एक बाज, जैसे किसी के मैं 10 किलो का बोझ उठाऊं और मैं उसको ड्रॉप कर दूं तो उसे प्रसन्नता क्यों नहीं होने वाली? उससे ये होगा रिलीफ। ओह माय गॉड, कितना भार हो रहा था, तो सच ए प्लेजेंट फीलिंग बेचारा है। सो उस सेंस में हमको उसको देखना है। तो जिस हद तक हमारी रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति ये भाव हुआ, जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि हाँ मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, अब उसके शौक की अनित्यता को समझ लिया, ड्रॉप हो गया कि उसमें आज उसमें देख लिया कि उसमें अनसेटिस्फैक्ट्री है वो। मेरी टीम जीत गई तो खुशी हो रहा हूँ, हार गई तो खुशी। आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड हाउ मच टाइम वी यूज्ड टू स्पेंड, इवन एज ए कॉलेज स्टूडेंट वी यूज्ड टू स्पेंड ऑन मैचेस। और तब तो 5-5 दिन के मैच होते, कमेंट्री सुने जा रहे हैं, क्या हो गया, अरे वो आउट हो गया, अरे अब तो इंडिया हार जाएगी या वो जीत जाएगा। And you keep on oscillating, mind keeps on oscillating from one end to the other end and this and that. So you can see that one particular kind of stuff is gone. So ये रूप के प्रति हो सकता है, ये शब्द के प्रति हो सकता है, गंध के प्रति, रस के प्रति, और धम्म के प्रति, थॉट्स के प्रति, विचारधारा के प्रति, which is a very strong problem for intellectuals who are intellectually active. तो उस तरह से हमको उसको देखना है कि हमने उसकी अनित्यता समझ ली। एक समय था कि हम परेशान हो रहे हैं, ये पॉलिटिशियन ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसको कुछ करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहिए चाहिए, और उसमें हम अपने परेशान कर रहे हैं, राग द्वेष जगाए जा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है, वो तो संसार ऐसा ही चलेगा। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं कर सकते तो फाइन, वी लीव इट फॉर नेचर टू टेक केयर। So that kind of a understanding, the relief which you can say, प्रसन्नता की जो अच्छा लगने लगता है इस बात से कि मैं अब उस उलझनों में से दूर हो रहा हूँ, उसको आप त्याग आधारित प्रसन्नता कह सकते हैं। अगर उसका आधार ये समझ है कि ये सब उस डायमेंशन में, इन सेंसरी वर्ल्ड में इम्परमानेंस, अनसेटिस्फैक्टरीनेस और इम्पर्सनैलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी है। जब हमारी वो बात समझ में आने लगती है तो धीरे धीरे चीजें छूट जाती हैं। सब नहीं छूटती, समय लगता है। कई चीजों के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वो नहीं छूटती है, उसमें टाइम लगता है। सो वी अंडरस्टैंड, बट जिस हद तक सोचती है उस हद तक चित्त शांत हो जाता है, उस हद तक हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं, और वो गहराई से इतनी कम होंगी फिर उठेंगी नहीं। ये फर्क है, बात खत्म हो गई, वो दैट डायमेंशन इज एंडेड। सो दैट्स द implication of त्याग आधारित प्रसन्नता, जिसे त्याग आधारित सोमनस्य। आई थिंक वी शुड यूज द वर्ड, the Pali word itself, domanasya, somanasya. Okay, I'll stop here. गीता ने हाथ उठाया तो पूछिए प्रिसाइजली। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म, ये जब अनित्य बोध, मतलब इट्स अ वेरी टेम्पररी, इट्स बेसिकली आई वुड नॉट से टेम्पररी, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग टू विद दिस सिचुएशन, this is impermanent, but you're not stopping it, you're continuing with the process, whatever you want to do, right? There is no clinging as such. It's just an understanding what you have, that this is that it will not give you any abiding satisfaction. Issue is not about what we are doing and what we are not doing. Issue is about understanding
that that is what I this want. dimension of sensory world does not have intrinsic happiness. And therefore, I don't need to worry about it. I don't need to give importance to it. To the extent it is necessary for my livelihood, I will do that. Fine. जैसे मैंने ग्रुप में एग्जांपल दिया था, मैं गाड़ी खरीदता हूँ या नहीं खरीदता हूँ, दैट्स नॉट द इशू. इशू इज कि मैं किस एटीट्यूड से खरीद रहा हूँ गाड़ी को. अगर मेरा जॉब है कि मुझे क्लास पढ़ानी है, आई एम टीचिंग इन स्कूल एंड आई हैव टू सी, मैं बोले ही जा रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी. Then I need a watch to know something, to know the timing. Even a monk needs a watch to know कि भाई मैं कितना बोल रहा हूँ, मुझे 1 घंटे के लिए बोलना क्या, मैं तो चालू ही हो गया, आप monk को तो रोकते भी नहीं लोग, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. So that's not a problem. The problem is this watch itself will give me happiness and that's it, and it is abiding. No, that's the problem. That's the issue. Okay, Deepak ji. I don't want to be precise. I don't want to extra give in too much detail. Leave it for you to reflect, and then we can again meet again discuss. आप म्यूट पर है, अनम्यूट कर लीजिए. मैंने फूल देखा, अच्छा लगा, फिर मुझे थॉट आया कि ये अनित्य है, मुरझा गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ. और अनित्य का जब बोध हुआ तो मुझे प्रसन्नता नहीं मिली कोई उसमें. मैं ये मैंने अभी आपसे निवेदन किया ना, आप पता नहीं प्रसन्नता को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नहीं, अनित्यता बोध तो अनित्य बोध हो गया ना, बस शांति हो गई, ठीक है, दैट्स ऑल. The issue is not about one particular flower. Issue is about root. हाँ जी, ठीक है. Okay, with respect to that flower, you can say that you understood. ना? Then issue about other objects, which are objects of sight. उनके बारे में ना. So we have to see the whole category. मैं मान लीजिए कहूँ कि मैंने एक फूल देखा, and I see it and I understand. It gives you a pleasant feeling, but my understanding is it will fall away, and there's nothing intrinsically beautiful or good with the flower. It is just my sangha which is giving that understanding. So then when it, जैसे आपने कहा, जब वो विदर हुए हो गया, मुझे दुख नहीं. It's fine. So the issue is not that this is an example of tyaga adharit sukh. If the sight of that object is giving rise to a deep understanding of anicca, dukkha, and anatta. This happiness this object which I am seeing as impermanent. The experience which I get on that basis is unsatisfactory. The experience which I get on this basis is not within my control, because if you are unhappy and you look at the same flower, you will not get that joy, pleasant feeling, and that flower has something else in it. Give that. So it's a question of one particular object. When we are taking of roop, it means sabbe rupa, every rupa of that kind. Everything which I see with eyes, I understand that. I'm not saying this is not useful. This is useful in the very first infinitesimal step. Then we see with other roop, तीसरे रूप, फिर चौथा रूप, and I see with respect to all roop, because क्योंकि ये characteristic तो सब रूपों की है. Then slowly and slowly I widen the scope and see, then I will say, अब मुझे, so the amount of relief experienced is dependent on the amount of importance we give to that object. अब एक flower को कौन object importance देगा? ठीक बात है. अगर आप, if you have something to which we have very strong importance in our life, and we see that happening, and we see its impermanence, and don't seek happiness in that object, it will give considerable more relief. It's a question of relief. That would be a much better word. That by understanding impermanence of objects, you get a relief from seeking those objects, seeking the happiness to those objects. उस तरह से समझेंगे तो शायद और सरल हो जाएगा. I want to clarify, but I can wait till shortly. नहीं, आप अभी पूछ लीजिए. It's not a question, but I want to understand what I think. Is it correct? I think by now I understand. I have understood this concept. छोटी दो बातें appears to be very shorty, but I think they were definitely very pertinent and very heavy on my mind that I must eat myself. Buying vegetables
weekly vegetables, I must select it myself. I did not like anybody else's to it, and I had to really take a lot of pains. COVID taught me. I did not, this did not come on its own. बट कोविड 2 साल में जब मैंने अपने आप नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, सारी माथाकूट अपने आप क्यों कर रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर हुआ 2 साल तो अब क्यों नहीं होता है। तो मेरा बिल्कुल वो जो नोशन था कि अपने आप खरीद के जीना है, वो खत्म हो गया। एंड it's a great relief that early morning once in a week I wanted to rush to Mother Dairy and buy it. Similarly, grocery. I used to go and buy it myself from a big store, selecting what I want and what I do not. ये सारी चीजें अब मुझे खत्म हो गई है, मुझे बड़ी रिलीफ दे रही है। एंड आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस एंगल कि तो इसमें कुछ नहीं रखा है कि मैं अपना समय ऐसे बिताऊं और उसके बदले में मैं और कुछ अच्छी तरह से कर सकती हूँ। दिस इज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड एंड it is out of my mind and it gives me a lot of and I just brushed it aside. Is this the correct understanding? That's what I wanted. जैसा मैंने निवेदन किया था, these I mean, they seem to be in that direction, but we must check for ourselves. Has this relief been based on understanding the impermanence of the quote-unquote pleasant feelings I used to get on going to market or doing the things myself, and that seeing the limitations of that, seeing the unsatisfactoriness of that phenomena and the uncontrollability of that phenomena, then obviously we are moving in that direction. So that आप check कर सकते हैं. Thank you for asserting that. That helps me to go further on this path. जी, जी. So it's an interesting criteria that आपने अभी बताया that there was pleasant feeling from one activity, and now आप कह रहे हैं it is replaced by the relief of not having to be dependent on that pleasantness. Is that how you put it? Because you know the way it's in the sutta, it's somewhat actually confusing, frankly. So maybe इस तरीके से अगर हम उसको फ्रेम करते हैं तो कम से कम मेरे लिए तो आसान हुआ शायद थोड़ा. I'm trying to frame it in this manner in order to keep the contrast with worldly happiness. मुझे लगा शायद इस तरह से और क्लियर हो जाएगा. बात वही है कि the understanding of that action which was being done earlier and giving happiness in a worldly sense is no longer giving that happiness because you have understood the limitations of that nature of happiness. So it is a kind of a transition from the worldly happiness to the renunciation-based happiness, so to say, and renunciation-based from that somnasya of this kind. So this itself, when I reframe it in this manner, this itself tells me the direction in which we will be moving as we progress in the path. So that the जैसे बाद में आता है ना कि त्याग आधारित प्रसन्नता के आधार पर सांसारिक प्रसन्नता को त्याग दो.
तो वो अपने आप उसमें रिलेट हो जाता है। तो मुझे लगा शायद इस तरह से समझेंगे तो और सरल हो जाएगा, ऐसा लगा। बात वही है, कहने का तरीका थोड़ा बदल गया। Well, in the sense कि relief and gross pleasantness are different, na, in an affective sense. Yeah, they are of different category, and that's the difference between त्यागा आधारित प्रसन्नता and गृहस्थ प्रसन्नता। तो इसीलिए दिक्कत क्या होती थी कि वैसे सूर्य जी कई बार पूछते थे कि मुझे तो प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही। I can understand, of course, example being something which has a minor role in my life to something which is happening every day. So then the effect will be felt, but the effect will be felt in the sense of relief only. And that can be a great relief, seems like a great burden is let off. उसको आप pleasant mental feeling के sense में लेते हैं तो then it is it can be interpreted in that manner also. The feeling of joy which you get from shopping, for example, has a value. It gives a pleasant feeling to many people. To some it gives unpleasant also, but it gives pleasant feeling to most people. And the feeling which you get by kind of understanding the limitations of all that and seeing the fruitlessness of that is quite often it's not so intense. It is mild, and we miss it. So in that sense, you can say that is gross and this is subtle. So being subtle, it escapes our attention. So जब मैं खुद सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि for example, I'm no longer being pressured into continuously giving into that pleasant feeling by seeking more and more of that object, that activity that brings about the pleasant feeling. So now that fall of pressure, that absence of pressure or reduction also of pressure is really what we're looking for. और अगर वो दायरा ऐसा दायरा है जो कभी कभी आता है, then it's not so noticeable. But अगर वो ऑब्जेक्ट या वो एक्टिविटी या वो डोमेन ऐसी है जो रोज मैं एनकाउंटर करता हूँ, तो वो absence of pressure and the pleasantness resulting from the absence of pressure is then more apparent. Then now that's how I'm now processing it. This is what I'm trying to convey. We've all seen that happen. जैसे आपने cricket के example दी, it was a passion with me for all of my student life till I joined PhD program. पूरा 20 साल तक के साल तक was passion. And how much time was spent? Commentary सुन रहे हैं, transistor से, and slowly realize that क्या है? What are we doing? What are we seeking? Joy in? And then you get a kind of sudden that it slowly drop it off because it becomes evident as a fruitless exercise. But when it was being appreciated, then it was a great joy. And alternating passions and things of that kind. Now it no longer matters. So एक ख्याल मुझे यहाँ ये आता है कि अपन ने पिछले वास में वो सुत्त देखा था ना, where the Buddha says that he could not give up sensuality till it was replaced by so now is that अब मुझे ये समझ you can correct me ना, मुझे ये समझ आ रही है कि if he's saying one thing in one sutta at one place at one instance, ये जरूरी नहीं है कि वही हर जगह वो framework लग जाएगा, because it in a logical
argumentative sense ये विचार उठता है कि that replacement of pleasure with not getting pressured into seeking the object of is perhaps transitionally dependent on the pleasure of collected mind, but not necessarily, isn't it? And if it's too far, I'm taking it too far, then you can just forget it and we can be quiet. That's also okay. Actually, it's good that you pointed it out. There is the number of, there's no kind of dichotomy between those two. There, from worldly happiness, we are given the transition to meditative happiness, but ultimately it is given transition to the same thing, dropping off of the defilements by panya. That is called greater than other worldly happiness. So here the transition is directly from worldly happiness to that third. To, if you say in that sutta there is 1, 2, 3, here is 1 and 3. So it's going the same way, but on the initial intermediate state is not mentioned, presuming it is experienced by the people sitting there. Correct. And here also transition is from 1 to 3, which is exactly the same as there. There it is said that you can drop this and move from one to other, which is based on insight into the lakshanas, to whatever extent it is done. Yeah, no, that I follow. I'm simply on the point कि actually वो दो बीच में हो ही हमेशा वो जरूरी नहीं है. That is now the thing that's coming to my mind, because there are so many places where he doesn't repeat the same formula for something, isn't it? Yeah, the stage number 2 may not be directly cultivated by people who are having strong panya-based kind of direction of search. But obviously that also would lead to concentration to some extent. It may not lead to jhana, but it will lead to the basic requirement of reasonable level of concentration always remains, because you can't otherwise even see the impermanence or unsatisfactoriness or even the uncontrollable nature. Yeah, right, I see. Thanks. सर सामिश और त्याग आधारित प्रसन्नता से जो उत्पन्न वेदना है उसमें कैसे दोनों एक ही है ना? उसमें डिफरेंशिएशन यही कहेगा कि जो त्याग आधारित होगी, it will be sustained happiness. अगर सचमुच में हमने उस तरफ पहुंच गए तो उस पर्टिकुलर डोमेन में अब हमें दोबारा से सुख ढूंढने की टेंडेंसी नहीं रहे. जैसे निरामिष है ना, उसके प्रति भी अटैचमेंट हो सकती है, एंड देन यू कैन टेक इट पर्सनली एंड गेट ट्रैप्ड. मैं दान करता हूँ और उसके प्रति बाद में उस समय तो बहुत प्रसन्नता लगी, एंड देन बाद में मैं उसके प्रति गौरव जगाता हूँ, मान जगाता हूँ, एंड देन आई गेट ट्रैप्ड. दैट त्याग आधारित में उस तरह की होने की संभावना काफी कम है बट कम है, क्योंकि तीनों कैरेक्टरिस्टिक पे काम किया जाता है. हाँ, निरामिष ही, मतलब मैंने गलत बोला, निरामिष और दोनों का कंपैरिजन था. समझ लीजिए, निरामिष का जो डायमेंशन है वो ये है कि उस समय किसी भी चीज, जैसे हम भोजन दान दिया या समय का दान दिया शिविर में जाके, तो लाभ होता है. कई बार मैंने देखा है कि लोगों को उस लाभ के प्रति उस प्रसन्नता जो है, इट बिकम्स अ मीन्स टू अवॉइड द अनप्लेजेंटनेस एट होम. शिविर में ही जाओ, शिविर में ही जाओ, शिविर में ही जाओ. दैट इज नाउ बिकमिंग ए
addiction. Addiction, right. So the impermanence of that is not seen. वो जो सुख मिल रहा है मुझे सेवा देने से, उसकी impermanence, उसके अंदर जो निहित unsatisfactoriness है, उसकी जो uncontrollability है, नहीं थी दिख जा रही. And there's in my one of my very young students, he actually in one course he went and he got very good effect of that seva. Next time when he went, he had some misunderstanding, or I will just put a tiff with the conducting teacher, and that devastated him totally. So much so that he gave up the whole practice. Can you believe it? तो आज शायद 10 साल हो गए उस बात. Still he's given up. So that's the risk of not seeing the impermanence, the intrinsic unsatisfactoriness and incontrollability of that experience. I hope that would make sense. Thank you, sir. Maybe slightly tangential. कल actually संगीता जी भी आई हुई थी ना, तो ये हमारा डिस्कशन चल रहा था इस बात पे. So I was wondering why you are specifically only calling it Anitya Sanya, especially because जो हम mental factors की list देखते हैं उसमें उन्होंने उसको club कर दिया है तीनों को साथ में into whatever is the English word, I don't remember now, but essentially suggesting wisdom या pragya or whatever. So I'm wondering if there is a specific reason कि आप वही use कर रहे हैं, and I'm wondering कि केवल उस शब्द को use करने का भी अपना trap है, because at least maybe for some of us there is a conditioning कि हाँ अनित्य तो हम कर रहे हैं so and so forth. So I'm and maybe it's anyways following the wording in the sutta, anicca, the unsatisfactoriness, and the viparinama dhamma. So viparinama dhamma we are interpreting as anatta. Many people interpret it in a different manner. They say it as a synonym of anicca. Then the unsatisfactoriness, of course, is the dukkha. That is clearly indicated in that way. If you see the sutta, it's clearly written. So the implication is obviously this, but the direction of understanding is from anicca to dukkha to anatta. So that the sutta itself mentions again and again anitya ke aadhar. Or this, and I'm always mentioning this anitya, unsatisfactoriness, and viparinama dhamma we are interpreting in sense of seeing the uncontrollability of that. So anicca is the entry point. That remains undenied. Because dukkha can be understood in many ways, and then you can miss the first and the last step. But अगर हम ये ऐसे कहें principally that you try and see all three in each. You can do that. But, that's the way we are interpreting those words. So that's it. Good. दिक्कत क्या होती है कई बार, if you put in both the cases, if you omit only dukkha and if you put only dukkha, then again there is a problem. If you omit other two and mention anatta, then people have their own understanding of anatta. And if you मुझे anatta तो समझ में आ गया, लेकिन वो उसमें बाकी चीजें नहीं समझ में आ. So you're right, you can mention all the three, but then the entry point of anicca is worth emphasizing.
ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि खास तौर पे दूसरे लक्ष्य में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकंसेप्शन। So naming them distinctly every time is helpful. Yeah, I found that more helpful in asking myself that question, है ना, that वो object या वो experience, do I see its, और मैं तो impermanence के साथ उसकी uncertainty भी जोड़ लेता हूँ, because for me personally it's a super helpful way to see check actually, and satisfactoriness, and then the out of controlness, you know, that for me is a much more effective way of putting it. Putting those three words जो भगवान ने वहाँ use किए ना, अनिच्चा, दुक्खा, विपरिणाम धम्मा, those three words are pretty worth repeating again and again. When I say three, all the three characteristics, people have their own notions of. Can I request you to just please repeat it, the last part? जी, मैं कह रही थी कि हम जब त्याग आधारित सोमनस्थ की बात करें तो ये देख लें कि उसका आधार उस पर्टिकुलर आयतन, क्योंकि हम 6 आयतन की बात करें, उस पर्टिकुलर आयतन की अनित्य स्वभाव, असंतोषजनक, वो शब्द मैंने यूज किया था, जो संतोषजनक नहीं है वो स्वभाव, और हमारे कंट्रोल में ना होना उसके परिवर्तनशील स्वभाव, स्वतः परिवर्तनशील, अपने आप परिवर्तन हो जाता है, हमारे वश में नहीं। ये तीनों डायमेंशन अगर हम उसको हर जगह चेक करके देखें तो उससे लाभ, तो हम किसी गलत फहमी में नहीं पड़े। तीनों में से कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं हुई। सर तो दो तो परिवर्तनशील ही हो गए, मतलब अनित्य भी परिवर्तनशील, हाँ, और वो परिवर्तनशील प्रकृति परिवर्तनशील का मतलब है कि उस सेंस में कि वो अपने आप बदल जाता है और हमारे वश में नहीं है, उस सेंस मैं उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि वो अपने आप परिवर्तन हो जाता है। एक तो चीज होती है कि हमारे इंटरेक्शन के कारण चेंज बदल रहा है, और यह परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है जो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो हमारे को लगता है ना, कई चीजों, अधिक काफी चीजों में लगता है मेरे बस में है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीजें। हाँ, वो बदलती है लेकिन मैं जैसा चाहूँ वैसा बदल, मौसम बदल जाता है लेकिन अपने कमरे का टेम्परेचर तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना, एयर कंडीशनर का। तो वो उसका जो फंडामेंटल नेचर है वो मास्क हो जाता है। जी जी, इसलिए उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई लोगों ने उसको सिनोनिम माना है, तो अपनी हमारी अपनी समझ है, तो वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन दैट मैनर ताकि ये हमारी प्रज्ञा डेवलप करने में, मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक। क्योंकि इस सुत्त की ये जो डायमेंशंस हैं, ये क्लियरली दे आर टेकिंग अस टू कंप्लीट लिबरेशन। तो उसमें अनात्म का बोध होना भी महत्वपूर्ण बात। जी, थैंक यू सर।
अगर और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 10 मिनट के बाद फिर परिक्ता पाठ करेंगे. So we are meditating, but session is still open. Sir, I was reflecting on the term somanasya, और मुझे लगा कि ये जो दो कॉन्टेक्स्ट है, गेह सितानी सोमनसंग एंड देन निखम सितानी सोमनसंग, so while the sense of pleasantness can have or can be experienced in a range of ways, जैसे हम happiness term को लेके थोड़ी हमारी जो confusion हो रही है, so even in a gay sitani somanasang one can have an experience of joy versus excitement versus just a relief. It can be such a range of things. And that being said, I was trying to simplify it कि ultimately जब कोई हमें चीज मिलती है तो हम कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई, all of that, but ultimately it's about a relief कि मिल गया. वो जो unpleasantness थी किसी चीज के नहीं होने की, उस वो end हुई. Moment of now nothing more to seek temporarily. And I remember that from some of the guidance that you have given earlier. So I was just thinking कि ये जो सोमनस्य है दोनों ही context में actually गेह सितानी and नेखम सितानी is about a relief from with respect to something. गेह सितानी में the relief that मिल गया and I can relax for a moment till the next craving arises. And in Gehe Sitani, it is now I can relax because no more of craving to arise any further. So if you could kindly please, say if this is the right way of thinking or if there's something, any correction needed here. Technically, when we analyze these sensory happiness, जो गैस सितानी सोमनस उसको analyze करते हैं, so technically we can say it is actually the experience of relief from sense of lack which we have because that object is not there. But that is a technical description. Actual experience is intense. Getting a person whom we like, getting an object which we like, eating something which we like, that experience has a sense of pleasure and it is strong, gross pleasure. ये वो भगवान कहते हैं ना, नंदी राग सहगता तत्र तत्र अभिनंदन. This is the description of sensory pleasure, sensory joy. ये हमारे अनुभव में आता है, वो हमारे contemplation से आता है कि हाँ एक्चुअली मुझे उसकी आवश्यकता थी, इसके कारण, और it becomes evident in some cases. For example, the example given of thirsty of a person traveling in a desert or something like that. That's very Krishna defined here. But for the actual experiences of a very intense kind and a gross and intense. In the name of Nikhama Sitani, it is subtle and long lasting. When you have a gross and very intense, and obviously it is much shorter. Here it is subtle and long lasting. So that's how I can distinguish. Okay, sir. Thank you. That's helpful. सर अभी जब दीप्ति बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे तन्हा अगर हम या जो उसको क्राइटेरिया पहले तो जो गैज़ितानी है जब खत्म हो रही है तो उसमें भी डिससेटिस्फैक्टरीनेस है, लेकिन जो फुल्ली कंप्लीटली आपकी खत्म हो रही है तन्हा, तो वो बिल्कुल ही उस जो उत्पन्न, तो तन्हा को एक क्राइटेरिया रख करके क्या वो बेटर वे मतलब ठीक रहेगा वो बात कि तन्हा
से हम rather than going into the feature, क्योंकि feature तो याद नहीं रहता ना, कभी कभी तो याद रहता है, लेकिन फीचर हमको याद करने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत। हाँ, मतलब वही अनुभव जो है कि भाई अगर तन्हा जब खत्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ देगी, लेकिन बट दिस इज नॉट तन्हा। वो मैंने डेफिनेशन उस तरह से यूज किया जस्ट टू गिव द फ्लेवर ऑफ दैट। अच्छा, so to explain the intensity of the feeling, that's what I said. The resulting impact is that we want it more and more. So when we want it more and more, then it becomes tanha, no? So tanha is a sankhara, which we'll see in a subsequent set of discussion. उसको अपने अनुभव के स्तर पे, फीलिंग के स्तर पे रखेंगे तो जी, ठीक ठीक। जब हम बहुत अच्छा भोजन करते हैं, contrast it with the feeling when we have overcome the attachment to taste. उससे कंट्रास्ट करेंगे तो समझ, या किसी और चीज के साथ जो भी हो। ठीक सर, थैंक यू। Sir, thank you very much for yesterday's and today's exposition on this matter, because this was really perplexing me quite a bit. Or after listening to this discussion, I feel a kind of relief that perhaps I'm making now some sense out of it. So what kind of relief is that? Is that Gestani? Yeah, there is the joy of understanding, which is Niramish Sukha. And it leads us to search for the more and more understanding, which will mean development of Panya. So it will obviously lead to that direction. Yes, जब भी हम कोई चीज सूत्र पढ़ते हैं और अच्छा लगता है, that's a Niramish Sukha, very subtle happiness which we get. And if that sutta is in dukkha, and we realize the limitation of that too. Now that sukha की भी अपनी limitation को अगर हम realize करेंगे, then it will become really the move in that direction of renunciant somanus. Related question, sir, is so is the realization of fruitlessness the same as the realization of anicca? क्या आपने पहला वर्ड क्या यूज किया, मैं क्लियर नहीं। Fruitlessness. This is fruitless to follow. Why? जैसे आपने अब क्रिकेट के बारे में बोला ना कि we realize how fruitless it is. But that may be just an experience कि ये तो बेकार में कर रहा हूँ. That is one of the words, because all of these actually take us towards nibbida, more disenchantment. हम देखें ना, all this ultimately culminates in that. So if there is a flavor of that, then we are moving in the direction of freedom. जैसे उसकी उस एक्टिविटी की impermanence, uncertainty, the limitations of that, the underlying unsatisfactoriness, not being in my control. I expect something and doesn't happen, even though the rest of the things are the same. So all that really leads us to understand इस direction में जाने की कष्ट आती है. Better to drop this search of happiness in that direction. It's all leading us into correcting our direction of search. So they all fall in place. All these things which we studied at different times, they all kind of converge in that direction, in the direction of changing our search for happiness, changing and moving towards disenchantment with the worldly stuff. And then we get moved towards dispassion and liberation.
Thank you very much.